गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे देखी जोटा कि यूरिनोजेनिटल रो कंपैरेटिव उपरे। तो जो थे कि आमे प्रीवियस क्लास रे गोनाड विषय पढ़ी थे। तो आज आमे देखिबा कंपैरेटिव एनाटॉमी वर्टिब्रेट ऑफ गोनाड्स। तो गोनाड्स रो कंपैरिजन विषय देखिबा। तो जो माने भी मो चैनल नुआ अच्छ मो प्रीवियस क्लास रो लिंक गुड़ाक डिस्क्रिप्शन में देदेवी सेठू जाकि तुम प्रीवियस क्लास गुड़ाक पाइजिब। एवं यही क्लासटा B.Sc 4th सेमिस्टर अच्छी ता सहित SSB जो बाहरी नुआ PGT SSB बाहरी से यहाँ बहुत हेल्पफुल हम। तो जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो पसंद थे लाइक एवं शेयर करूँ। तो फास्ट देखा आम कंपैरिजन केमती करवा देख। तो वर्टिब्रेट एक्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोटा कि जाइगोट रिजल्ट फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल आउ फीमेल गेमेट्स। तो आम जाचु वर्टिब्रेट्स मान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एवं जाइगोट केमती बाहरी थाए। जाइगोट केमती होता है जिते को मेल और फीमेल गेमेट्स बा स्पर्म और ओभार फ्यूजन रे जाइगोट तैयारी होता है फर्टिलाइजेशन होगी। तो ओभा एंड द स्पर्माटोजोआ आर प्रोड्यूस इन द गोनाड्स। आम एटा प्रीवियस क्लास रे +2 रे मध्य जानिछु जे गेमेट्स दुई प्रकार मेल हूँ स्पर्माटोजोआ और फीमेल ओभा। तो ए माने कोठू प्रोड्यूस होता गोनाड रु है। तो गोनाड कौन टेस्टिस हूँ मेल और फीमेल हूँ ओभारी है। तो देखो गोनाड आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडोम। एटा मत जानिछु एटा मन रखी दो गोनाडा कोठू तुम डिराइव होची मेसोडोम रु डिराइव होची। डिफरेंट डक्ट इन मेल एंड ओविडक्ट इन फीमेल transport gametes to the outside of the body. Sexually reproduction in vertebrates have the sex are separate with the exception of hagfish having the hermaphrodite gonad. तो बेसिकली मन रखी तो जोटा वर्टिब्रेट्स मान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जोटी कि आम जानी सेक्स माने कौन सेपारेट होता। सेपारेट सेक्स माने कौन मेल सेक्स ऑर्गन मेल बॉडी रे एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी रे थाए। एटा आम आगु जानिछु अर्थात सेक्स आर सेपारेट। किंतु हर्माफ्रोडाइट गोनाड माने कौन जो मानकर बोथ सेक्स ऑर्गन जनक देहरे थाए अर्थात से बाइसेक्सुअल कहबा गले तांको देहरे गोटे ही थबो ताको आमे कहबा हर्माफ्रोडाइट जोटा कि हॉगफिश क्षेत्र में देखा जाए है। गोनाड ऑफ मेल आर कॉल्ड टेस्टिस produce sperm. Female gonad are called ovary which produce ova. Different duct are usually the archinephric or the Ovarian duct है which also transport urine from the kidney. तो तांको जो डक्ट अच्छी आउ कौन अच्छे आर्किनेफ्रिक अच्छी किंबा ताको आम उल्फियन डक्ट बोली कहू जार काम है किडनी रु यूरिन को ट्रांसफर करिबारे भी सहायता करे। उल्फियन डक्ट इन एमनियोट persist to become the ductus difference accessory sex organ bearing the bring the germ cell together है। तो देखो कौन कौन अच्छी प्रथम हूँ देख रिप्रोडक्टिव डक्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड है इंटरमिनेंट और कोपुलेटरी ऑर्गन। तो 3 भाग में आम विभक्त करचु सेक्स ऑर्गन को माने जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन को है। तापर देखिबा आमे तापर देखो आमे देखिबा in embryo gonad originate as pair of the thick elevated fold or genital ridge of coelomic epithelium from the roof of the coelom one on either side of the dorsal mesentery है। gonad remain suspended in the coelom from dorsal body wall by fold and dorsal mesentery called जोटा जी मेओसोर्सियम इन मेल एंड मेजोभेरियम इन फीमेल। तो यहाँ मन रखी था तो से जोटा जो गोनाड अच्छी से सस्पेंड होता है कौटी सस्पेंड होगी कौटी थाए सिलम रे सस्पेंड होता है डोर्साल बॉडी ओवाल रे एवं ताको आमे जदि मेल क्षेत्र में मेओसोर्सियम बोली कहबा एवं फीमेल क्षेत्र में मेजोभेरियम बोली कहू है। एसोसिएटेड विथ द गोनाड आर स्पेशल गोनोडक्ट और जेनाइटल डक्ट भाषा डिफरेंसिया इन मेल और फीमेल पाखरे कौन अच्छी ओविडक्ट बोली कहा जाए टू ट्रांसपोर्ट गैमेट टू द क्लोएका और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली 2 प्रकार देखा जाए जोटा आम जानलु
বেশি মানে স্পেশাল গনোডক্ট ଅଛି। ଗনোଡକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଗনোଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଯିଏକି ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ ପାସ୍ କରିଥାଏ। ତ ବେସିକାଲି ଭାଷା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ମେଲ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପାଖରେ ଓଭିଡକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏକି ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଲା, କ୍ଲୋଏକା ହଉ କିମ୍ବା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡିକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଲା। ହାଏଭର୍ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏ ଫ୍ୟୁ ଏଲାସ୍ମୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଖିବା, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଜେନିଟାଲ୍ ଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜେନିଟାଲ ଡକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେର୍ ଏଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ମ ଏସ୍କେପ୍ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଭାୟା କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆବଡୋମିନାଲ ପୋର୍ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ତାଙ୍କର କେମିତି ଗ୍ୟାମେଟ୍ଟା ବାହାରିଥାଏ? ଆବଡୋମିନାଲ ପୋର୍ ଦ୍ୱାରା। ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଭାରିଜର କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। Usually, ovary are oval structure. In some teleost, ovary are hollow structure, while in other teleost and agnatha, the ovaries are compact. Egg are discharged into the xylem. In reptiles, birds, and monotremes, ovaries are solid but develop fluid-filled cavity. मन रखिता eggs are discharged into the xylem है। जदि इन मामल क्षेत्र देखा ओभारी आर कंपाक्ट विदाउट चेम्बर और लाकुना, सेठी लाकुना किंबा चेम्बर नहीं है। द टू लेयर ऑफ द टिपिकल ओभारी इन मामल्स आर कौन कौन? दुटा लेयर देखा जाए बेसिकली कौन कौन देख। फास्ट हूँ देख देती कोटेक्स आउटर इन द डेभलपिंग ग्राफियन फॉलिकल जो डेभलप होता है कोटेक्स रे है। आउ कौन देखा जाए ये देख ओव्यूम विथ इच फॉलिकल with nourishment by the follicular cell. Now at maturity certain follicle push to the surface of the ovary and either rupture to liberate the ovum. जो rupture हो जाए है मेच्योर टाइम से कौन जे फॉलिकल गुड़ा रप्चर होगी से कौन जे ओव्यूमटा रिलीज हुए जोटा आम ओव्यूलेसन बोली कहूँ है। जो ओव्यूम रिलीज हुए और मैच्योरेशन समय से ताको से टर्मटा कौन यूज करा जाए? ओव्यूलेसन बोली कहा जाए एंड रीअब्जॉर्ब है। अच्छा कोटेक्स गोटे गला कोटेक्स, सेकेंड आसला मेडुला। तो मेडुला कौन? व्हिच इज इनर एंड मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड लिम्फाटिक वेसल, स्मूथ मसल्स एंड नर्व फाइबर है। तो ये प्रकार दुईटा भाग में विभक्त है। तब नहीं देख ग्राफियन फॉलिकल वेरी इन साइज डिपेंडिंग अपॉन द सीजन व्हेन इट इज एग्जामाइंड एंड ओपन द वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज। लार्जर ओवा इन लोअर फॉर्म बिकॉज ऑफ देयर यॉक कंटेंट। तो लोअर फॉर्म मान पाखे लार्जर ओभा देखा जाए कहीं से भितर से ओभा भितर कौन था? यॉक थाए। ओभारी अटेंड मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इन सम वर्टिब्रेट। आ वर्टिब्रेट मान को जब किछिटा वर्टिब्रेट को देखिबा ब्रीडिंग सीजन रे से मान को ओभारीटा मैक्सिमम साइज पर्यंत देखा जाए है। तापर देखिबा इन फिशेस है। इन इट इज ए पेयर ऑफ फ्यूज only the right ovary fully developed and the left टा होची कोन degenerate in the some elasmo branch जोटा कि लाइट तामने कोन राइट ओभारी टा तांगर फुली तांगर फंक्शनल किंतु लेफ्ट जो ओभारी अछि सेटा कोन थाए बेसिकली डिजेनेरेट अवस्था रे देखा जाए। मोस्ट टेलियोस्ट हैव साकुलर टाइप ओभारीज व्हिच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ओभा ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तांको ब्रीडिंग सीजन रे लार्ज नंबर ऑफ ओभा से माने रिलीज करती। तो केमती कौन देख राइप ओभा थिबो तो राइप ओभा जो मेच्योर ओभा ताको राइप ओभा भी कहा जाए है। सेंट्रल ओभारियन कैविटी सेठू आसला से कौन डक्ट ओविडक्ट को आसला सेठू आउटसाइड को आसला है। एटा तार होची पासेज वे है। तब एडल्ट टेलियोस्ट मान क्षेत्र देखा लाक ऑफ क्लोएका एंड हैविंग कौन सेपरेट ओपनिंग फ्रॉम द यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट ऑफ द ओविपोर्स कौन व्हाइल अदर आर ओविविविपारस। Some have fertilized egg that develop while inside the ovarian follicle. Other have the young that develop within the cavity of the ovaries. है। तो यहाँ हूँ डिफरेन्स बुझीपार है। तो ये मत देख विभिन्न प्रकार यूटेरस स्ट्रक्चर देती जो ड्यूप्लेक्स यूटेरस केमती अच्छी जब आम बाय कन्वेट बोली कहूँ। तापर देख सॉरी ड्यूप्लेक्स होची एटा होची ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर एटा होची बायपार्टिएट यूटेरस। तापर जदि एटा हला कोन बाय कन्वेट यूटेरस एटा होची सिम्प्लेक्स यूटेरस है। तो
यूटेरस गुड़ा को स्क्रीनशॉट लेकिना तुम खातार लिखिदियो किंबा तो मुझे तुमको टेलीग्राम रे आज देदेवी तार पीडीएफ देदेवी सेठू मध्य तुम पाइज है। तापरे आम्फिबियन विषय देखा है। तो आम्फिबियन देख इट इज ए सर्कुलर इन शेप ओभा एस्केप into the xylem through their external wall है। शेप varies with the shape of the body। तो बॉडी रो शेप अनुसार एटा मध्य भेरी करे। फैट बॉडी आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ द ओभारीज है। तापर रेप्टाइल्स क्षेत्र देखिबा स्नेक किंबा लिजार्ड ओभारीज आर सर्कुलर एंड एलोंगेटेड है। टर्टल्स आउ क्रोकोडाइल हाव द सॉलिड ओभारीज है। सर्टेन ओविविविपारस मान क्षेत्र देखिबा जेटा स्नेक हो किंबा लिजार्ड हो हैव कॉर्पोरा ल्यूटेआ दैट फॉर्म फ्रॉम द रप्चर ऑफ फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो तांकर सेही जो कॉर्पोरा ल्यूटेआ अछि सेठी कोन हुए रप्चर हेकिना फॉलिकलटा रप्चर हुए एवं ओव्यूलेशन हुए बा ओभारी एग रिलीज होता है। तापर देखिबा इन बर्ड्स both ovaries are present in the embryonic development. In most birds the right ovary is degenerate and left becomes the functional gonad है। तो मन रखी एटी बर्ड्स मान क्षेत्र राइट ओभारीटा डिजेनेट हो जाए किंतु लेफ्ट ओभारीटा फंक्शनल थाए। स्टिग्मा एंड सिटाट्रिक्स is a band located on the surface of the follicle through which mature ova escape from the ovarian follicle into the xylem। तो बेसिकली एमान को कौन रहा स्टिग्मा थिबो किंबा ताको सियाट्रिक्स बोली कहा जाए जो जगार कौन होता है जोटा कि फॉलिकल सरफेस रे थाए आ जो बाट देकिना कौन होता है मेच्योर ओभा बाहर को रिलीज होता है आउ सेटा सीलम को आसी थाए। मामालियन ओभारी जदि देखिबा लोकेटेड इन द लुम्बार और पेल्विक रीजन आमर जो वर्टिब्रेट रीजन अच्छी ना वर्टिब्रेट जो अच्छी जो लुम्बार रीजन होता किंबा ता तड़कू जोटा अच्छी पेल्विक रीजन है पेल्विक रीजन हो सेठी आमर मामारी ओभारी देखा जाए है। कनसीडर स्मॉल इन रिलेटिव टू द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द मामाल बहुत छोटो साइज रो थाए। प्लासेंटल मामाल हैव कॉम्पैक्ट ओभारी विथ एन एंट्रम विदिन द ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल भितर एंट्रम थाए कवर बाय द जर्मिनाल एपिथेलियम फ्रॉम व्हिच oocyte एराइज। आम जानिचु जे जर्मिनाल एपिथेलियम रु आमर oogenesis बा स्पर्माटोजेनेसिस हेकिना आमर केमिति तुम गैमेट फॉर्मेशन होता है आम आगु पढ़ीचु +2 रे है। तो सेठी थाए जर्मिनाल एपिथेलियम थाए। Some of the oocyte becomes mature ova during the life of the individual है। तो देखो ovum escape the ovary when the wall of the graphian follicle rupture है। graphian follicle rupture हो गला माने ovum टा रिलीज होबो सेटू। cell that remain आफ्टर फॉलिकल रप्चर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटम। एटा भी आम जानी ग्राफियन फॉलिकल जो मेच्योर की रप्चर हो जाए सेठू से जगार कौन हो जाए सांगे सांग से कन्वर्ट हो जाए कॉर्पस ल्यूटम को है। आ कॉर्पस ल्यूटम इज द वन सोर्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन नीड टू द मेंटेन प्रेगनेंसी। आ कॉर्पस ल्यूटम जो से कन्वर्ट हो जाए सेठू कौन हुए सांगे सांग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुए जी कि आमर कौन हुए प्रेगनेंसी को मेंटेन करे। एटा आम ऑलरेडी +2 रे सबू देछि देख +2 रे सबू देछि आबे +2 रे पढ़ले मधे जानि परिबा है। बिफोर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजेन इज द प्रीडोमिनेंट सिक्रिटरी प्रोडक्ट ऑफ द follicle cell। atretic follicle are those that fail to rupture and degenerate। एटा मन रखि दो ताको आट्रेसिया बोली भी कहा जाए है। मन रखिता आट्रेसिया माने बा आट्रेटिक फॉलिकल माने कौन जिते बड़े कौन सी फॉलिकलटा रप्चर हो पारे ना रप्चर ना माने कौन सी ओभर रिलीज हो पार ना डिजेनेट हो आट्रेटिक फॉलिकल बोली कहा जाए। बास यही कंडीशन को आट्रेसिया बोली कहा जाए है जोटा कि देखा जाए। अच्छा रप्चर होना तुम ईस्ट्रोजेन रप्चर होबार पूर्वर ईस्ट्रोजेन सिक्रेशन होता है और रप्चर होगापर ग्राफियन फॉलिकलटा कन्वर्ट हो जाए कॉर्पस ल्यूटम को से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करवा है। तो ये क्लीयर हल। तापर आम देखा ओविडक्ट विषय है जहाँ आम मामाल मान क्षेत्र में आम कौन कहू ताकू आम ताकू फालोपियन ट्यूब बोली कहू है। मोडिफिकेशन ऑफ द म्यूलेरियन डक्ट
which degenerate in the male, differentiated in the region. Posterior portion expand to becomes uterus, serves as temporary storage site of the egg and place where the young develop. In fish, like some teleosts have modified abdominal pore where egg escape from the xylem. एमानकर ओविडक्ट जगार एमानकर कौन डायरेक्ट एमाने xylem को egg को रिलीज करिथांती. इलास्मो ब्रांच हैव द ओस्टियम ट्यूब which open to into the xylem. तो एलास्मो ब्रांच मान को ओस्टियम अच्छी जहाँ द्वारा कि से माने egg को xylem को छाड़ी थांती है. नेरो डिस्टेंसिबल ओविडक्ट on either side. Cell gland in the enlargement of the oviduct. Beyond the cell gland is a uterus that open into the cloaca. Ovisex shelter and nourish the embryo in the viviparous species. तापर यदि amphibian मान को क्षेत्र देखिबा, in amphibian there are pair elongated tube with ostia. तांगर ostia अछि enlarged posteriorly to form short uterus and uterine enlargement. Uterus open independently into the cloaca. तांगे uterus टा बाहर को cloaca को open हेची. Uteri in most amphibian serve for temporary storage of ova. तो तापर कौन सी लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट हैव ग्लैंड दैट सिक्रेट जेली लाइक मटेरियल. मन रखिए ओविडक्ट रे तांकर गोटे लाइनिंग अच्छी जो जगह ग्लैंड अच्छी आ से ग्लैंड काम होला जेली लाइक मटेरियल को से सिक्रेट करता है टू डेवलप द पासिंग एग. तो से जेली लाइक सब्सटेंस द्वारा कौन होता है एगटा आग को पास कर सुविधा होता है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड मेल grafts in male grafts. The female is amphibioxos. तब देखो नेक्स्ट देखिए आम जब रेप्टाइल क्षेत्र रेप्टिलियन ओपन इनटू द सीलम थ्रो स्लिट लाइक ओस्टिया. मध्य ओस्टिया अच्छी. टर्टल एंड क्रोकोडाइल हैव द ग्लैंड इन द अपर पार्ट दैट सिक्रेट albumin. Cell is deposited in the uterus or cell gland in the shark, snake and lizard. Uteri enter cloaca independently and fertilize occurs in the upper part. Some snake and lizard are oviparous, other reptiles are oviviviparous. Oviparous माने कौन oviviviparous oviparous जानी चो तो तब देखो रेस्पिरेटरी देदेला ये रेस्पिरेटर भूल दीची रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मेन दीची भूल दीची रेस्पिरेटरी सिस्टम ना यहाँ हूँ कौन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल है यहाँ हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पिरेटर दीची रिप्रोडक्टिव सिस्टम है भूल दीची तो देखा पाच जोटा कि ह्यूमन मान क्षेत्र में तो आम तो प्रिवियसली जानी ये देखो यहाँ हूँ ओविडक्ट ये जो ओभारी अच्छी यहाँ हूँ यूटेरस ये सर्विक्स तल को भेजिना. तापर यहाँ देख तुम डग कैट डग कि काउ मान क्षेत्र देख यहाँ हूँ भेजाइना यहाँ हूँ सर्विक्स है. तापर ये जगह यूटेरिन हर्न अच्छी ये जगार ओभारी अच्छी है. एमान को देख रेड माइस कि रेबिट्स मान क्षेत्र यहाँ भेजाइना यहाँ सर्विक्स. तापर यूटेरिन हर्न ये जगार अच्छी ओविडक्टा ये अच्छी है. तापर जदि हम नेक्स्ट देखिबा ओफिस्टोनेफ्रोस जदि देखिबा हैला इज डिफरेंशिएट इनटू द एंटेरियर जेनाइटल एंड द पोस्टीरियर रेनल पोर्शन. तो एंटेरियर रे जेनाइटल अच्छे पोस्टीरियर रे रेनल पोर्शन अच्छी. इन द एम्ब्रियो ऑफ द एनुरा ईच टेस्टिस इज मेड ऑफ कौन two partition. In male frog the anterior portion disappear and the posterior portion becomes the adult functional testis. तो एम एंटेरियर पोर्शन टा डिसअपियर जाए किंतु पोस्टेरियर पार्टा कौन हो जाए एडल्ट मान क्षेत्र में फंक्शनल टेस्टिस हुए. इन मेल ऑफ एमनियर्स किंबा ए मेटानेफ्रस डेवलप as a result functional kidney with the own urinary duct and ureter to transport urine. Thus mesonephric duct becomes solely a genital duct.
from each testis sperm pass through the epididymis, then through vast difference to reach urethra है most of the mammal क्षेत्र देखा testis descend into the scrotal sac होची outer cover जोटा कि testis को cover कर रखी था however some mammal each monotremes insectivores elephant whale ହେଲା ଏମାନ କ'ଣ lack of scrotal sac ତ ଏମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିସଟା କେମିତି ଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଏ ଟେଷ୍ଟିସଟା abdominal cavity ଭିତରେ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି so that the testis remain permanently intra abdominal like ovaries ହେଲା ତାଙ୍କ abdominal cavity ଭିତରେ ଥାଏ ହେଲା ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟର ପଚାରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟର କାହାର टेस्टिसटा abdominal cavity अच्छी से तुम बहुत गुला ऑप्शन देथिबो सेठी तुम एलिफेंटर ना भी देथिबो हला तो एलिफेंटर होची abdominal cavity अच्छी तापर देखो कोपुलेटरी ऑर्गन कोन कोपुलेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन एमनियोट्स since they have usually external fertilization जेहेतु तांकर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तांकर कोपुलेटरी ऑर्गन नाही हैला बट एमनियोट मान को क्षेत्र देखिबा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल अर्थात इनसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है एंड प्रोसीड बाय कोपुलेशन और मेटिंग तांकर मेटिंग होता है इन इलास्मोब्रांच मान को क्षेत्र देखिबा बेस्ड ऑन द पेल्विक फिन आर मोडिफाइड एज इंट्रामिनेंट ऑर्गन कॉल्ड क्लास्पर एटा को मन रखी था एलास्मो ब्रांच मान को जोटा इंटरमिनेंट ऑर्गन अच्छी ताको आमे क्लास्पर बोली कहबा जोटा कि शार्क मान को क्षेत्र भी देखा जाय हला इन शार्क द पेल्विक फिन बिकम्स मॉडिफाइड इनटू ग्रुप्स इंटरमिनेंट ऑर्गन जोटा क्लास्पर दीज आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इंसर्टेड इनटू फीमेल क्लोएका टू इंसर्ट स्पर्म तो ये क्लास्पर काम है कौन फीमेल क्लोएकार से इनसर्ट कर से स्पर्म को इंजेक्ट कर देखो इन सेवेरल टेलियोस्ट द एनाल फिन इज मॉडिफाइड एज गोनोपोडियम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट है इन शार्क एंड लिजर्ड हैव द पेयर ऑफ द रेट्रैक्टाइल ग्रूव्स एंड शेक लाइक हेमीपेनिस which can be everted through cloaca. All reptiles have the hemipenis as copulatory organ है एक्सेप्ट स्पेनोडम को छाड़ी देले बाकी जेतिकी भी रेप्टाइल्स अच्छी समस्त कपुलेटरी ऑर्गन को हेमिपेनिस बोली कहा जाए सम बर्ड्स जदि देखिबा डक बा ऑस्ट्रिच हैव द इरेक्टाइल पेनिस तांकर इरेक्टाइल पेनिस थाए मामल मान को पाखरे इरेक्टाइल पेनिस भी देखा जाए कपुलेटरी ऑर्गन हिसाब रे हैला जेतिकी मामल अच्छी सेमती फीमेल यूटेरस विषय जो देखिबा तो देखो द यूटेरस और वूम्ब इज द मेजर फीमेल हार्मोन responsive reproductive sex organ of most mammal including human है one end the cervix open into the vagina आम जानिचु जोटा मझे यूटेरस गोटे साइड जोटा ओपनिंग है cervix थ्रो रे vagina को है जोटा कि आउटसाइड को ओपन है while other is connect to the बोथ फालोपियन ट्यूब को कनेक्ट होता है डिपेंडिंग अपन द स्पेसीस है तो मनकर यहाँ है यूटेरस एपटे मनकर यहाँ हूँ फालोपियन ट्यूब जे के कनेक्शन है ओभारी को आ तलपटे जोटा कनेक्शन है यहाँ है कौन सर्भिक्स सर्भिक्स पर ब्लास्ट को बाहर को अच्छी कौन भेजाइना है तो डिपेंड कर स्पेसीस उपरे इट इज विदिन द यूटेरस दैट इज द फिटस डेभलप ड्यूरिंग द गेस्टेशन बा प्रेगनेंसी समय फिटसटा यूटेरस रे डेभलप होता है while developing completely in the placental mammal such a human तो placental mammal तो पूरा develop होता है two uteri usually form initially in the female fetus and placental mammal they may partially or completely fuse into a single uterus depending on the species है the uterus consists of the body and the cervix तो आम जानी बॉडी यूटेरसटा बेसिकली तार जो बॉडी यहाँ हूँ बॉडी पार्ट आ तक सर्भिक्स अच्छी है सर्भिक्स protrude into the vagina cervix ru vagina को open है the uterus is held in the position within the pelvis by the consideration of the endopelvic fascia which is called ligament ताको ligament बोली कहा जाए हाँ these ligament include the pubocervical transverse cervical ligament cardinal ligament and the urosacral ligament है it is covered by the sheet like fold peritoneum or broad ligament है
Thus, uterus is essential in the sexual response by the directing blood flow to the pelvis and the external genitalia, including the ovary, vagina, labia and clitoris. ହେଲା तो एगुड़ा हूँ एक्सटर्नाल आमर जो सेक्स अर्गान गुड़ाक कौन कौन है जोटा हूँ आम भेजाइना लाबिया क्लिटोरिस एगुड़ा रहा है देख द रिप्रोडक्टिव function of the uterus is to accept the fertilized ovum which passes through the tubal junction from the fallopian tube है एटा काम से फर्टिलाइज्ड एग को एक्सेप्ट करके रखिबो इट इम्प्लांट इनटू द एंडोमेट्रियम तापर कौन कर यूटेरस भितर एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे ये इम्प्लांट हो जाए and derive nourishment from the blood vessel which develop exclusively from the this purpose है the fertilized ovum becomes an embryo attached to the wall of the uterus secrete create placenta तैयारी करबो and develop into the fetus until child birth है से यूटेरस भितर इम्प्लांट करिवो सेठी से बढ़िवो जेते पर्यंत से जन्म न होईची से यूटेरस भितर से रहिवो है तो टेम्परारी तार एटा गोटे कौन है तार घर परी हो गला ड्यू टू anatomical barrier such as pelvis uterus is pushed partially into the abdominal due to expansion during pregnancy है even during pregnancy the mass of human uterus amount to only about 8 kilogram है जैसे कि 2.2 pounds है तो देखो यूटेरस इज लोकेटेड इनसाइड द पेल्विस इमीडिएटली डोर्सल है डोर्सल पहला टू द यूरिनरी ब्लाडर एंड द भेंट्रल टू द रेक्टम है तो डोर्सल साइड यूरिनरी ब्लाडर को आउ भेंट्रल साइड रेक्टम मझिरे आम यूटेरस पेल्विक मझिरे अच्छी है द ह्यूमन यूटेरस इज पियल शेप and about 3 inches है 7.6 centimeter long है the uterus can be divided anatomically into 4 segments और होची fundus corpus cervix तापरे internal os है तो यूटेरिन वाल से स्ट्रक्चर दे दीजिए है एटा स्ट्रक्चर जोटी कि इम्प्लांट होता है टिके झापसा आसी नहीं अच्छा द लाइन देखा जी दूर पढ़ी पार्छ मुझे धीरे धीरे तुमको पढ़ी शुणाई दूसरी जी पढ़ी पारुची है द लाइनिंग ऑफ द यूटेरिन कैविटी इज कॉल्ड कौन एंडोमेट्रियम ताको एंडोमेट्रियम कह जाए इट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल एंडोमेट्रियम एंड द बासल एंडोमेट्रियम from which the formers arise है damage to the basal endometrium result the adhesion है formation and or fibrosis है in some placental mammal including human the endometrium build a lining periodically which is said सेड अप कौन इफ नो प्रेगनेंसी अकर जो एंडोमेट्रियम सेड अप करे छाड़ी जाए जो ब्लड भेसलटा रप्चर हो जाए केतलू जो से प्रेग्नेंट न थाए है शेडिंग ऑफ द फंक्शनल एंडोमेट्रियम लाइनिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग जोटा कि शेडिंग माने कौन शेड माने होचे छाड़ी जिबा है रप्चर हो सेल गुड़ाक बाहरी जिबा है ता माने कौन वन जो ब्लड भेसलटा रप्चर हो कौन हम मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम है तो यहाँ आम जाचु है तो यहाँ रहा तार ये विषय है तापर नेक्स्ट देखिए आउ कौन देती डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज एंड attribute of the physical and physiological health weight environmental factor or cardiac rhythm photoperiodism and physiological reaction on the organism to length of the day or night the effect of the menstrual cycle to the reproductive function of the uterus is subject to hormone production है
सेल रिजेनेरेशन एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो यार काम कौन बेसिकली ताहले आम कौन जाने मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली काम है हार्मोन प्रोडक्शन भी करें सेल को आउ थे रिजेनेरेशन कर जो रप्चर होता फिर रिजेनेरेशन करब तापर आउ कौन बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल मे भेरी फ्रॉम ए फ्यू डेज टू 6 मंथ पर्यंत भेरी करि पारे है डिपेंड करे है बट कैन भेरी वाइडली इवन इन सेम इंडिविजुअल often stopping for the several cycle before resuming है marsupial किंबा मोनोट्रिम डू नॉट हैव द मेंस्ट्रुएशन एटा को मन रखि बहुत इंपोर्टेंट है मुझे ये पढ़ेली जे मार्सुपियल मान पाखे कि मोनोस्ट्रिम मान पाखे मेंस्ट्रुएशन देखा जाए नहीं। द यूटेरस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स नोन एज मायोमेट्रियम। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम इज नोन एज जंक्शनल जोन है व्हिच बिकम्स थिक इन द जोटा जी आडेनोमायोसिस ताको आडेनोमायोसिस कह जाए। द पैरामेट्रियम इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू around the uterus. The perimetrium is the peritoneum covering the fundus and ventral dorsal aspect of the uterus है तापर टाइप ऑफ यूटेरी उपरे टिके देखिबा है The reproductive tract of female monotremes mainly in the presence in the urogenital sinus and the cloaca है तो डिपेंड करुच्ची। तो यहाँ देख विभिन्न प्रकार टाइप ऑफ यूटेरी देख ड्यूप्लेक्स तापर बाइकन्वेट तापर देख जदि नेक्स्ट देखा आम सिम्प्लेक्स बाइपार्टिट तो विभिन्न प्रकार यूटेरी देखा जाउची है तो देखो 4 टाइप्स ऑफ यूथेरियल यूटेरी देखा जाए है द ड्यूप्लेक्स यूटेरस देर आर 2 यूटेरी एंड 2 सर्विस है द ड्यूप्लेक्स यूटेरस इज फाउंड इन द यहाँ मन रखी लागोमॉर्फ्स और रोडेंट एमान पाखे देखा जाए। बाइपार्टाइड यूटेरस हैविंग 2 यूटेरिस एंड 1 सर्विक्स है द बाइपार्टाइड यूटेरस इज फाउंड इन द सेटासी एंड द कार्निवोर्स एमान पाखे देखा जाए। तापर देख बाई कन्वेट यूटेरस द यूटेरिन हॉर्न आर वाई शेप देखा जाए बीन सेपरेट मेडियली बट फ्यूज डिस्टली where they form a common chamber है which open into the vagina through the single cervix है तो यहाँ क्या पाखे देखा जाए फाउंड इन द इंसेक्टिवेरस सम बैट्स तापर देख पेरिसोडाक्टाइल्स एंड आर्टियोडाक्टाइल्स एमान पाखे देखा जाए। द इन सिम्प्लेक्स यूटेरस ऑल सेपरेशन बिटवीन द यूटेरिन हॉर्न इज लैकिंग है सेपरेशन से देखा जाए नहीं बहुत सिंपल फॉर्म रहता है द सिंगल यूटेरस ओपन इनटू द भेजाइना थ्रू द सर्विस है तो यहाँ क्या पाखे देखा जाए प्राइमेट बैट किंबा एडेंटेट एमान पाखे देखा जाए है तो देखो the Eutherian internal genital system is basically pair except in the vagina है 3 primary type of uteri are recognized duplex biconvex और simplex but there are significant intermediate type the more specialized medium and short biconvex and simplex type of apparently have involved independently in several mammalian order है तो यहाँ देखा पाच मोनोट्रिम कि मार्सुपियल केमती थाए एम सब है पॉली एम्ब्रियोनिक प्लासेंटल मामल है এটা টিকে দেখিবা পলিএমব্রিয়নি ইজ প্রবাবলি এন্ড রিসেন্টলি ইভলভড mechanism to adopt a species with a simplex uterus and simultaneously gestation of the multiple young है तापर जो नेक्स्ट देखिए आउ कौन कौन अच्छी जोटा इम्पोर्टाट से कहीदे है हाँ ये इम्पोर्टाट थी बेसी नहीं हाँ
এইটি দেখো all eutherian with several months of the active gestation have the large जोटा होची newborn and medium to the short biconvate or simplex uterus where these with a very short gestational period usually have large litter and small Altician newborn and long tubal uteri है microscopic study of the cervical region is necessary, especially in the smaller species, to ascertain whether a given uterus is duplex or biconvate. है The difference between the mammalian group in the uterine muscular histology are often great, especially with respect to change during the estrogenital and pregnancy. এটা তোমার কিছু দরকার নেই ହେଲା এতে কিছু দরকার নেই ହେଲା এটা ଜଷ୍ଟ ତାର ଲାଷ୍ଟ ସମାରୀରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ଉନାହିଁ ହେଲା ଏତିକି ଯାଏ ମନେ ଏଇଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା ଏଇ ନୋଟ୍ଟା କରିଦେବ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଦରକାର ଅଛି ତ ମେନଲି ଏତିକି ଯାଏ ଲେଖିଲ ଏଇଟା ଲେଖିଲ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟେରସ୍ 4 ଟାଇପ୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏଇଠାରୁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ହେଲା ଏତିକି ହେଲେ ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କଲେ ବି ଚଳିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ୟୁରୋଜେନାଇଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଆନାଟମି ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ୟୁରୋଜେନାଇଟାଲ୍ର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଶା ରହୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ